जम्मू कश्मीर टीवी रियासत की हर बेजुबान तबके की तर्जुमानी करता है। जेके टीवी जो इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी पर यकीन रखते हुए बैनुल अक़वामी तौर पर मंजूर और तस्लीम शुदा हक के इजहार राय का पासदार होने के साथ साथ ये वाज़ेह करता है कि इदारा किसी भी शो में होने वाली गुफ्तगू या इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज का जिम्मेदार नहीं। Hi, Assalamu alaikum. I'd like to welcome you all to ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਮੌਸਮ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਸੀ ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਸਾਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਸਨ। ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਨੀ ਆ, ਪਹਾੜੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਗੈਸਟ ਹੋਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਸਨ ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਕਸ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਸਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਨਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਬੁੱਝੀ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਾਂ ਨਬੀਲہ ਅਹਿਮਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਪਠਵਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨੌਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੋਵੈਲਾ ਹੈ ਉਹ it shaya hoya and you can get hold of it via Amazon and it is called Despite Our Differences. Mari jiri shairi na majmua o is saal ne aakhir par chapsi and it's going to be through Yaffle Press. अपनी ज़बान जी है मैं एडजस्ट को ना करन लगी। मेन रीज़न इस माने कि असाने जेह्ड़े ऑडियंस मेनली हो ओह् तुसां कश्मीर ने बंदे हो जेह्ड़े दुनिया विच जित्थे भी रहने हो ते असां काफ़ी वर्सटाइल बंदे आं। कम अज़ कम 2-3 ज़बानां तां असां बोलने ही होने आं। सो मैं अपनी ज़बान इस तरह मिक्स रखसां जी मिगी पता तुसां ज़्यादातर भी इस तरह ही बोलने हो अन समझने हो। सो अज्ज नी जेह्ड़ी है ना मैं अपनी एक नज़म जो इब्तिदा करसां सुनाला इस तो पहले कि मैं अपनी वंडरफुल गेस्ट की बुलां। सो पहली मारी नज़म जेह्ड़ी है इट्स नानी ना ग्रां and it says it ज़िंदगी गुजरी गई है, ज़िंदगी गुजरी गई है पर नानी ना ओह् ग्रां नहीं भुल्लना, ओह् दलीज ओह् चुल्ला नहीं भुल्लना, ओह् दलीज ओह् चुल्ला नहीं भुल्लना, तपनी दपैह्री कल्ल चुम्मनेआं हाला नी रोटी ते ताज़ा सालन नहीं भुल्लना, ओह् मक्खन ओह् लस्सी नहीं भुल्लनी, बड़ी हाला ना लाट नहीं भुल्लना, सर्दियां विच मामू नी मूंगफली ते गर्मियां विच जूस नहीं भुल्लना, सरीए नाल बाई वी पींग नहीं भुल्लनी, नानी नी कस्सी वी चोट नहीं भुल्लनी, हत्थां विच मेहंदी नी घोगी नहीं भुल्लनी, लीरां नाल बनाई होईयां गुड्डियां नहीं भुल्लनियां, भरावां दियां दित्तियां स्वीटां ते लाड नहीं भुल्लना, ओह् अखबारे जहां ओह् सारे रसाले नहीं भुल्लने, ओह् घड़े ना पानी ओह् चार नहीं भुल्लना, ओह् खुल्ले बेह्ड़े ओह् बूह्टेआं दी छां, ओह् ईदां ओह् दशूरे ओह् शबरातां नहीं भुल्लनियां, जिंदगी गुजरी गई है पर नानी ना ओह् ग्रां नहीं भुल्लना। जेह्ड़ी अज्ज नी गेस्ट न असां ने ओह् असां दी प्हाड़ी ज़बाना विच ब्यूटीफुल नज़मां लिखने न ते असां सारेआं गी वापस मेमोरी लेन करने ते उन्हां दा नां है कोमल राजा। सोचो जितने जितने बंदे उ'नेंगी तक्की चुके हो इंतहाई इंप्रेस्ड हो शुक्र करने हो कि उ'नें लिखना शुरू कीता ते शेयर करने ते जेह्ड़े नो वाकिफ अज्ज तो बाद इंशाल्लाह यू विल बी अ बिग फैन ऑफ उन कोमल राजा पुंछ ने रहने वाले ते इस वक्त जिन्हें PhD स्कॉलर इन सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ते जर्मनी विच पढ़ने लगे हुए ऑथर एंड पोएट एंड फिलोसफी ने शौकीन न। मैं उन्हें इनवाइट करनी आ ते तुसां की मिलानी आ। हाय अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम अस्सलाम। Thank you very much for being my first guest on my first show. तुसां की मैं इस माने चूज़ कीता सी कि अक्सर आखने होने कि राइटर या जेह्ड़े हैन शायर एक्सेट्रा इंक्लूडिंग मियां मोहम्मद बख्श ने शिकायत सी कि अपने घरों गै जेह्ड़ा अपनी शायरी नहीं मिलनी ते मैं सोचेआ अगर मैं शायर जेह्ड़ा ना या इनवाइट करसां प्हाड़ी ने भी करसां उर्दू ने भी करसां ते माड़े अंग्रेज दोस्त या एक्स्ट्रा उ'नें गी भी करसां आई थॉट लेकिन इब्तिदा अपने घरों करनी चाहिदी है ते तुसां जेह्ड़ा ना साढ़ा कम्म जेह्ड़े असां अपने प्हाड़ी ग्रुपां विच पुज्जने आं पढ़ने आं we're absolutely loving it. You constantly take us down memory lane. There's some lafaz use karne uske yaad ashni hai. And so you just kuch nazman like proper badinga mingar just galla karne on is like you do this and this and this. It's like really warming our hearts. And I want to say thank you. बहुत शुक्रिया साने इतनी पजीराई ना इतनी हौसला अफजाई ना और यकीन मनोगे मिकी भी ज़ाहिर है बहुत
एक ਉਹ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰੂਟਿਡਨੈਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ हमारे अपने ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਯੋਂਡ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈ। And this is the magic of poetry, I think, that it connects people beyond borders. Border Yes. तो पता आसानी जिंदगी ना एक अलमी है, being a resident of the state of Jammu and Kashmir. जी So yes, it's thank you very much for your such big praise, and yeah, you're most welcome. आज कोमल इब्तिदा से अपनी एक दो नज़्म सुनाना चाहते हो? फिर मैं आपको चंद सवाल भी पूछने। Okay, that would be very sudden, but yes, let's do that. And I think for हमारी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪੂ ਵੀ ਬੜੀ ਅਚਾਨਕ ਸੀ ठीक कि I was like unable in the middle of the night. I just woke up ना और हम्म, जिस वक्त अपनी आँख खुली जा रही है और उसके बाद मेरी सहन ही ना हुआ ना, वो एक दो मिसरे हमारे दिमाग में बस फिरना शुरू हो गए जी और वो उस भी कितना एक्साइटेड किया उस चीज़ के मैं सोचा कि ये एक बारी लिखन होगा। आजकल तो ज़रा आसानी है कि कॉपी पेन जी नहीं मैं उथे अपने फ़ोन ने नोट्स ऊपर लिखनी रहनी है। जी और देन आई रोट इट एंड आई शेयर्ड इट लाइक द नेक्स्ट डे और मिगी इतना अंदाज़ा नहीं सा कि इतनी ज़्यादा वो पसंद की जैसी है उसने ऊपर इस किस्म ना रद्द अमल ऐसी लोग मतलब मैं तो कैजुअली बहुत अरसे दी चीज़ां शेयर करनी हैं। जी बट मैं अपनी उस नज़म थी शुरू करसां तो उसना उन्वान है निकिए तू हुण निक्की ना रही। जी ते एह् इक ज़ाहिर है एक फेमिनिस्टिक क्रिटिक है। ते बहरहाल मी शायरी इन्ना मज़ा खराब होई जाना जिसलै शायरी की सब पहले एक्सप्लेन करना शुरू करी छोड़ना जी होता है। बंदा सम सुनासा मतलब अपनी मर्ज़ी ने ऑडियंस कड्ढने रवो। बेशक तो चौथी त्रप्पी रही हैं कुड़िये, सिरै चादर टकाई ना सकनी। जी चौथी त्रप्पी रही हैं कुड़िये, हम्म, सिरै चादर टकाई ना सकनी। थम्मै जितना कद कढियाई पर, हम्म, बेड़ी झाड़ू लाई ना सकनी। हम्म, नाड़ेर तू हुण नाई ना सकनी, हम्म, रंगड़ेर तू हुण जाई ना सकनी। जी क्रिकेट वै या इट्टी डंडा, हम्म, रेसां भ्राऊ नाल लाई ना सकनी। हम्म, नवाशां वेलै बन्ने नहीं नवाशां वेलै बन्ने बेही कै, जी उच्ची अवाज़ै च गाई ना सकनी। yeah, ओपरे चोपरे लोकां अग्गै, हम्म, गल्लां तू हुण बाही ना सकनी। जी अद्धी छुट्टी वेलै निक्किये, हम्म, बज़ारै चों तू खाई ना सकनी। जी मसीतै अंदर सपारा पढ़ने, हम्म, मुंडेआं नाल तू जाई ना सकनी। yeah, परांदा बाही कै चोटी करने, हम्म, बालां दी तू हुण कटाई ना सकनी। जी निक्किये तू हुण निक्की ना रही। जी thank you very much thank you it's a beautiful poem मैं क्या भी बुझी हुई है पर जिल्लै भी बुझो you get something new from it ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗੀ ਨਜ਼ਮ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਉਹ ਇਚਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਗਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ अच्छा शायरी जेह्ड़ा ओह् एज़ ए जॉनरा में सोची समझी के नहीं कदे भी स्टार्ट कीता लेकिन म्हाड़े अंदर जेह्ड़ा इक राइटिंग कैपेबिलिटी है सी बहुत बचपन थी ज़ाहिर है मैं as far as I remember I think it was first time I was in 5th grade or 4th grade so असां ने स्कूल ना गया सा एक ट्रिप वन जी डे ट्रिप्स होने से ना उत्थे लोकल पता नहीं बनजोसा गए सी असां या कुछ इस तरह दी जगह पर तो वापस अची असां टीचर्स बाया कि एह् रुदाद लिखनी तुसां इस सफर ने इस ट्रिप ठीक ने ठीक ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਸੋ ਆਈ जी ਜਸਟ ਰੋਟ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਈ ਗॉट द फर्स्ट प्राइज हाँ तो माशाल्लाह वो मतलब हमारे से बहुत ज़्यादा एक उस सेंस ही सरप्राइजिंग था क्योंकि ये प्राइज बेस्ड है या ज़ाहिर है साने स्कूल जी ने 9th 10th ग्रेड ने लोग भी उस विच उन्हें वो भी पार्टिसिपेंट्स थे और ठीक आई बीइंग 5th grader yeah winning the first prize was something like कि yes अच्छा a massive thing yeah और उत्थों फिर खैर मैं तो भी अपने आप की इतना सीरियस नहीं लिए इंदा क्या कि ऑफ कोर्स 5 ग्रेडर इतना तो हम्म, ना नहीं होना बट देन आई एम अ डायरी राइटर ना सो मैं जी हमेशा से डायरी लिखनी आता है मैं ठीक हाले थोड़ी भी लिखनी है वो हमारी आदत है जी और नज़्म अलबत्ता मैं जेह्ड़ा ऐ ओह् जिस वक़्त मैं 8th 9th क्लास विच आई आं, ते ठीक ओह् मैं इक अपने आप गी पैह्ले लेकिन ओह् माड़ी मैं अंग्रेज़ी भी जदूं ट्राई करना जस्ट द राइमिंग स्कीम जदूं असां 9th जी क्लास इंट्रोड्यूस होया ना कि अच्छा जी पोएम भी एक चीज़ होनी और राइमिंग स्कीम होनी उसने विच जी
Yes. So I found it very interesting, and I did these creative experimentation. Also, teacher padhane se A B rhyming scheme, and I was like, Yes. wow, it's like mathematics. So let's try it. So Ji. that was deliberate poems. You know, I have a dream that I have an ice cream and something like that. So Yes. I made Yeah. these, but then the serious thing was also, I think, when I remember it very vividly. It was about the situation, political situation in Jammu Kashmir. So it was Ji. about India, Pakistan, and army, and pressure, and glacier, and I just tried to Yes. make these rhyming words, but Yeah. it had a deep down meaning in it. Ji. Then afterwards, I think seriously I took it when I went to Government College Lahore. So वो एक आसानी वो अदारा है ही इस तरह ना कि उसने एक ज़ाहिर उसने पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन अदबी ट्रेडिशन नाउ मालिक है लेगेसी है तो जी। उत्थै एक एनवायरनमेंट उसने किस तरह लभना कि उसने अंदर जड़ियां भी सलाइयां तो वन वो मजीद पॉलिश होनी सो आई हैड लाइक देन सो मेनी opportunities to write and share and present my things and then get critique फिर उत्थों सारा सिलसिला जी, शुरू होया yeah. so That's yeah, wonderful. that's started. I think that's an interesting journey. As somebody in fifth, grade to write an article, the Buddha school that you look by, that's that's a lot of Yes, that's this a is lot like of praise, I isn't even it? didn't remember these things, no. But Yeah. when you asked me, or to Yeah. जिसे अपनी उस journey की retrospect भी तक हो ना, then you try to make an arrangement that okay, how you trace a Yeah. line. So like normally, I would never thought about that. Okay, in my 30s, I would be talking about that fifth grade event of my life. But Yeah. yes, I think that's how it started. Yeah. Thank you. ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰੀਆਂ sort of ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ it was about barriers and difficulties but ਮੈਂ sort of three levels interested in such ਪਹਿਲਾ level ਇਹ ਹੈ ਕਿ it personal family level ਨਾ sort of ਜਿਹੜਾ ਨਾ were there any barriers ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਕਲਚਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਐਕਸੈਟਰਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਨ The second level is as a writer ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ it's of different genres. Do you have a preference for one of them? In non-fiction or fiction, yeah, poetry. Inna which case ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ certain themes easy ਲੱਗਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਣੀਆਂ what barriers do you face in writing? And ਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ different languages ਵਿੱਚ ਲਿਖਨੇ ਹੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨ languages ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਨੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ certain ਮੌਜ਼ੂਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵੈਸਾ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੋ So barriers and difficulties, personal life, writer, and it's multilingual. Okay. So yeah, to answer your first question that कि personal तो साना जड़ा एक parental response है इस सारियां चीज़ों पर तो असाने मतलब luckily I would say that I have a very supportive family and my especially I think I can like in this world it's very difficult to I know people जिन्हां ना बड़ा problematic relationship हो जाना क्योंकि असानी generations different and mindset different है लेकिन हमारे केस जिस तरह है कि मेरी both of my parents father and mother both मतलब I think उन्हां से ज़्यादा मिगी कोई भी नहीं समझना खास तौर पर my mother so my father used to be this kind of creative person and experimental person so I grew up listening to बोस्तान ने अशार फारसी विच ते गुलिस्तान ने फारसी ते इस तरह ने ना अब्बू की कुछ थोड़े थोड़े याद होने से इस तरह नहीं कि असां घर कोई लाइब्रेरी बनती सी ते बड़े असां कोई पढ़ा लिखा बैकग्राउंड सा नो नॉट लाइक दैट बट उन्हां की शौक सा सो उन्हां की लिखने ना पढ़ने ना इना चीज़ां बड़ा शौक सा फिर माय मदर वाज आल्सो आई मीन शी हैज दिस कैपेबिलिटी बट शी नेवर परसूड इट सो उन्हां ने अपनियां प्रेफरेंसेस होइयां उसन बट आई रिमेंबर दैट शी आल्सो यूज्ड टू राइट डायरी Like that in that diary, I mean, she would also write songs sometimes, and I think she never shared that, and I'm not sure कि मैं किस तरह बाना चाहिए ना कि नहीं. लेकिन उसके बाद ज़रा उन्होंने pursue किया, उन्होंने अपनी reasons होसन, I cannot say for sure why. तो मैं कि अपने करूँ जड़ा है वो इस तरह ना हमेशा encouragement लब्बी और फिर it's a journey. For example, उन इस ना जड़ा एक stage आएगी ना, it was never like that before. It was an experimental journey. और इस तरह ना तुसा एक स्ट्रॉन्ग खास तौर पर मतलब मैं तो उस ज़माने ते लिखनी है जब सोशल मीडिया वाज नॉट इवन इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट एंड देन इट वाज नॉट एज मच पॉपुलर एज इट इज टुडे जी तो लेकिन असाने पेरेंट्स हमेशा वो जिस जेडे स्कूल ने रसाले होने से
उसी च जी, अगर असां कोई चीज़ां छपियां तो ओह् उसनी कॉपी स्पेशल एक सेव करियै घर रखने से तो ओह् उत्थों जी, फिर तुसेंगी अंदाजा होई जाना कि हाउ मच इट या मीन्स टू देम। जी, सो मेरे अब्बू ते बल्कि माड़ी बड़ी भैन जेह्ड़ी ऐ ओह् निक्के होने अखबारां च भी लिखनी होनी सी फूल एंड कलियां एंड मैं भी लिखनी होनी सी यंग जेह्ड़ा पेज है डॉन जी, न्यूज़पेपर दा जी, यंग पता नहीं क्या भुल्ली गेआ हून मिगी नां। जी, So जी, yes, so in my case, my family has always been very supportive in this sense, particularly like कि okay, studies is your main job, but जी, other than that, हर मैदान विच तुस अपने आप की करो explore, और जी, it's open for you and we are at your back. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. Yeah. Now as a writer then, Mhm. in terms of different genres, um, I, I suppose that you write in, अपने आपने अंदर as a writer की इतनी difficulties होनियां जैसे कि कई बार समझ भी बाद विच आछनियां तो सानू सबर किया जे रिया. That's true. तो जित्थे थोड़ी सवाल है ना genre ना, I am still struggling with that. Because I, for sure, what I know about myself is that I have this writing capability, and I am a writer. Like when मैं at least life ने ऐसे stage ऊपर पहुंच गई हूं कि मैं बड़े दावे नाल गल बाई सकनी हां। पहले तो एक होना ना humbleness, unsuriety, blah Yes. blah blah, नहीं यरा I'm जी, just trying माड़े दा मैं बस तजर्बे हैं। No, I think जी, yes I am, because I have already written so many things, be it academic या non-academic. दूआ सवाल है fiction and non-fiction ने हवाले नाल, so I think I always talked in the metaphorical language, but I talked about the real life events. So it's not जी, completely fiction and it's not completely non-fiction. ठीक कि है. मतलब Yes. इंस्पायर्ड बाय जनरली भी फिक्शन इंस्पायर्ड बाय रियल होनी, लेकिन एक होनी ना जी, प्योर फिक्शन जेह्ड़ी yeah. हैरी पॉटर टाइप और प्योर फिक्शन जी, है, या वैम्पायर डायरीज है। आई दैट्स नॉट माय कप ऑफ genre and stuff. जी, yeah. एंड आई थिंक कि मैं जेह्ड़ा ऐसे नी फॉर्म च या प्रोज नी फॉर्म च चीज़ां लिखनियां Mm, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਸਨੇ mm, ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨਸਾਈਟ ਹੋ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ mm, ਫਿਲੋਸੋਫਿਕਲ ਪ੍ਰੋਬਿੰਗ ਹੋ ਸੀ, जी, even though it's just the unfolding of your everyday routine events, चाहे वो yes. एक ब्रेकअप ना कोई सिचुएशन है, कोई मोहब्बत नहीं सिचुएशन है, कोई Mm, डेली लाइफ ना व्हाटएवर काइंड ऑफ सीन। जी, तो इस चीज़ें ने अंदर मेरी हेल्प इस तरह भी हुई कि व्हेन आई परस्यूड लाइक इन माय एकेडमिक जर्नी एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, सो लाइक एथनोग्राफिक राइटिंग is very much similar to the short story writing अफसाना जिसके तुम आई सकते हो, but जी, anthropological writing is of course with the real people, real stories, real settings. So वो जी, बड़ा एक हमारे से complementary journey बनी गया कि हमारी जी, creative yeah, capability उसने भी जड़ा जम होएगी yeah, ethnographic work ने अंदर। So I जी, write my ethnographic stories as if it can be filmized very easily कि बड़े आराम नाल उसकी right, उस ऊपर film बनाई सकते हो कि every जी, direction is there। ठीक, तो yeah, और genre नाल मैं हाले थोड़ी struggle करनी है, because I think I for sure don't want to label myself as a poet। mm, मैं नहीं उस ऊपर हाले तक mm, भी उस तरह की कि पोएट्री ने अपने बड़े अपनी मतलब हमारे अपने कुछ beliefs हैं to be a poet। Okay, जी, it's one thing that you have that's inside you this creative capability, and तुसां mm, जितने पूरा मैदान है, तुसां करो तजर्बे modern जी, poetry ना yeah, वो भी है, point भी है कि like subjective and everything। जी, But in this sense, I am a kind of traditional oriented and okay, classical oriented person, so I go by the by rule, by book। तो yeah, इस मामले में ठीक, क्या है कि नहीं, one must have this craft तुसां mm, पीता हुआ हुआ है। जी, और क्राफ्ट ऑफ कोर्स वो स्किल है, वो अशना वो उसने ऊपर से की प्रैक्टिस करनी पैनी। exactly, और yeah, कुछ लोगों की होना कि वो पैदाइशी तौर पर मौजूद होने और उन्हें की mm, कोई लोड नहीं होनी, मगर उन्हें की भी होनी लोड। सो जी, पीपल प्रैक्टिस इट, एंड आई थिंक वन मस्ट अगर तुम पार्ट की स्किप करी का हो के नहीं जी मैं क्राफ्ट नहीं बंदिश च नहीं रहना चाहना, तो नज़म में ज़्यादा mm, पॉसिबिलिटी है, तो गज़ल च घट है, तो mm, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖੀ yes, ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ग़ज़ल ਵਿੱਚ भी हर है जी, competent और नज़्म ਵਿੱਚ भी competent है, then you can जी, talk or choose। जी, So I think if as a poet I will not especially in Urdu language I जी, have no claims जी, that I am a poet in Urdu language, but yes in Pahari I think इसी चीज़ तुसाने तीसरे सवाल का जवाब है कि जी, लैंग्वेजेज़ ने हवाले नाल जितनी सहूलत मिगी पहाड़ी ज़ुबान विच है ना, क्योंकि पहाड़ी जी, ज़ुबान इच द थिंग्स कम इन रिदम। The जी, very first sentence and the very next sentence, they're already in a music जी, it comes to me, because I am familiar with
वर्ड जड़ा है उन्होंने डिफरेंट किस्म ने एक्सप्रेशंस वास्ते कड़ा लफ्ज था किस तरह इसी और असाना जड़ा अपना एक एथॉस है पूरा कल्चर उसकी किनी जी है तो म्यूजिक बनी जाना जी ऑटो म्यूजिक है वो जी हमारे वास्ते उर्दू विच जाहिर है मिगी उसकी इस गल्लों मैं उर्दू भी ज्यादा प्रोज पोइट्री की थी उस जी पोइट्री जी होनी नहीं होनी बहरहाल नसरी नज़मां जड़ियां ने मैं लिखियां जी क्या कि उसके विच वो बहुत बड़ी डेलिब्रेट एफर्ट वो सामने वाज़ेह होई जानी सी ना कि अगर आई ट्राई टू जी मेक इट yes म्यूजिकल सो आई डोंट डू द डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ मेक इन माय जी डार्क रूम आई डू एवरीथिंग बिहाइंड द जी ऑफ कोर्स जी कट yeah, कूट ये वो सब आप करते हैं मगर जी जेड़ा हमारा स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन है लैंग्वेजेस हम्म, ने हमारे नाल पहाड़ी में की बड़ी सहूलत है हम्म, उर्दू विच भी की सहूलत है और इट डिपेंड्स कि मैं विच लैंग्वेज आई चूज़ उर्दू एंड इंग्लिश खास तौर पर हम्म, Uh, I think it is related to my inspiration and my from the muse, the idea of muse. So ਜਿਹੜੀ जी हमारी muse ਦੀ language हो सी ना वो जी automatic creative expression ਦੀ language वो बन जानी ਉਹ डिफाइन कर सी and so अंग्रेजी ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਨੇ ਹੋ ਸੌਰੀ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਨੇ ਹੋ नहीं जर्मन तो हमारी हाले इस काबिल नहीं हुई मैं सिर्फ जर्मन जुबान च कुछ एवं तजर्बे किए से असा ने बिल्कुल वो भी बहुत बेसिक ओदा शायद जर्मन तो उन्होंने सॉन्ग भी ना समझने हो सन लेकिन वो होना नहीं लैंग्वेज ने दौरान ही डिफरेंट जी लेवल्स दे सॉन्ग्स होने और तो जी सानी प्रैक्टिस वास्ते बनते होने तो इतने जी मिगी उस तरह लगे कि जिस तरह वो एक रिदम इच से तो जी उन्होंने हमारे माइंड इच किया कि आई थिंक इन पहाड़ी जी So that's why when I was learning ये हमारा जो लैंग्वेज लर्निंग ने एक्सपेरिमेंट होया ना उस विच फिर मैं तो कहा कि विचों इंग्लिश की भी कड्डो तो उर्दू की भी कड्डो डायरेक्ट पहाड़ी जर्मन तां मिगी जी जर्मन आई ना नहीं आई जी सकनी तो वो yeah फिर वो भी ऑटो पर ट्रांसलेट हुए तो मैं एक दो कुछ जी गाने जर्मन ट्रांसलेट किए मैं खुद जर्मन नहीं हाले कुछ प्रोड्यूस किया हाले तो जी हमारी लेवल भी नहीं है उतना लैंग्वेज में ये thank you meu buģisam te ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸੋ ਇਸ ਮਾਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ in terms of मैं recently किताब पढ़न लगी हुई हाँ तो उस 1780 सेटअप हुई हुई है तो उसने जो उस वक्त एक्सप्लोर करने लगे हुए वो बूटियां ने तजर्बे करने लगे हुए ताकि इनके डिफाइन करने लगे हुए इनके बूटियां ने पत्ता है स्टेम है तो वो जरा ऑथर है ना वो सॉर्ट ऑफ पुश करने लगे है आइडिया कि ये चीज़ चंगी नहीं कि सिर्फ जरा ना बूटे की इंडिविजुअली नहीं तकना चाहिए ना तो उन्होंने कि अस बंदे भी जरा ना इस 1780 चाहने कि इस पास जान लगे हैं कि जे पोएट होता सिर्फ पोएट होना चाहिए ना जे राइटर होता सिर्फ राइटर होता जे फिक्शन नहीं होता सिर्फ फिक्शन नहीं हो तो इसमें लाइक एक बंदे की लिमिट करने लगे या कि तुम सिर्फ एक शोबे की स्पेशलिज्म करो सो मैं भी यस जरा ना उस ऑथर उम्मीद करनी है कि तुम एक शोबे की लेबल लाने नहीं पर आप या फिक्र कोनो करने लगे तो जेडी चीज थोड़े जनरेशन क्रिएटिविटी उसकी इसमें एक्सप्लोर कर सो Yes. Yes. I also agree because we have like multiple selves and our every self should be nourished. जी ਉਹ ਉਸਨੇ ਉਸकी तुसा बॉक्स विच बंद ना करो ते बॉक्स विच बंद करना में भी ज़माने ना काम होना उन्हें नहीं जी मर्जी है वो करने ना और डब्बा भी ज़माने ना वो बंद करन खोलन जो मर्जी करन exactly आसान कर देना ये thank you are you ready to share a few more poems I would like to share one of my poems in English language जी and उसने एक वजह है वो मैं सोची का आंदी सी नाल कि मैं ठीक है सारे शोई जो शेयर करसा उस वो थोड़ी जी रिलेटेड है उस विच मैं एक जिक्र करनी पई है कि फ्रॉम वेयर आई गेट इंस्पिरेशंस लाइक हमारा जी जड़ा मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ना इट्स नॉट फिक्स्ड ऑफ कोर्स आई कैन गेट इंस्पिरेशन एनी टाइम फ्रॉम एनीथिंग बट जी मेनली उसने अंदर वो फिर उस गुफ्तगू बादिश करने आता मैं तुसा की एक अंग्रेजी नज़म सुना ठीक है and then so it's a morning poem. In the morning light, before the sun has risen high, I wake up with a feeling, a special kind of high. It's the feeling of love that fills me up inside. And I long to hear my beloved's call, text, smile, or see their face. My heart beats with excitement as I reach my phone, hoping for a message, a sign that I'm not alone. With every notification, my smile grows wider still. As I bask in the warmth of my beloved's love, my heart they fill. I become a poem in the morning, with verses yet untold, a symphony of words and thoughts waiting to unfold. As I long for a reader, a philosopher to see the beauty of my complexity, the depths of my creativity. So let me wake up to the call of my beloved, to the sweet sound of their voice, my heart soothed. For in their love, I find the inspiration to be the best version of myself, creative and free. wow. That's a very beautiful poem and on many different levels
I think if it's just about feeling that you're not alone in the morning, it's such a lovely, thing to know that there's somebody else and somebody who sees you. And I think on a deeper level, as somebody who does write and creative and has a lot of complexities, it's so wonderful to feel that you're seen and you're heard. So Yes. like, thank you for sharing that. But ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਇਟਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਵੇਰੀਜ਼। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਸਾਸ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ I think every writer can relate to that, or every person who is an artist can relate to that, that we feel the things that apparently are kind of non-existent, no? Yeah. तो मतलब एक छोटी जी बारिश ने कतरे नी टिप है ना, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਦਫਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਰਾਤਾਂ ਜਗਾਈ ਕੇ ਰੱਖ ਸੀ, because it goes in your head and it's already a piece of art. So sometimes it's like weather, sometimes it's my kyunki hamare jehde antennas hai na, sensors hain towards nature, they're also very active. So my mood pure din na bahut zyada dictate hona, the kind of morning came upon, मतलब in a sense कि जिस तरह नी सुबह हो सी ना, वो बादलों वाली अगर सुबह है तो हमारा पूरा दिन वो बादल डिक्टेट कर सन, जे धूप निकली हुई है तो धूप डिक्टेट कर सी. So I have like पता नहीं कदों माड़ी ये फ्रीडम मार को जालिम समाज खसी किनसी जिसले मेरी नौकरियां करनियां पसंद है, रोटियां बेलनियां पसंद, लेकिन फिलहाल I enjoy this freedom totally कि the sun will decide how I'm going to spend the day today. So if sun decides to appear, I will follow. If cloud decides to appear, I will follow. So that's how I start my day. So sometimes हमारे से इतना एक beautiful मंजर है ना कि it's like every day. It's like sun rises every day. But it gives me sometimes हमारे से सुबह जिसले हमारी आँख खुली मिगी सूरज नाल एक हमारा interaction होना ना पहला, तो I can stay in that state and I will, मतलब मैं उठे stuck हो जानी हूँ. कितनी दफा हमारे नाल इस तरह होया. ये morning poem भी मैं बिल्कुल इसी तरह लिखी, इस सूरज नाल मार टाकरा होना पे खिड़की जो मैं तकली पई हूँ, और forget about कि मैं उठी गया कोई नाश्ता करना, मेरी भूख लगी हुई, मैं दिन शुरू करना, अपनी कैलेंडर चेक करा, कड़ी कोई मीटिंग तो नहीं आज गया, forget about everything. So sometimes it happens like that. And दूआ जड़ा है कि मारी जड़ी म्यूज ना एक जड़ा मतलब मैं I create ideas of persons in my head. And then I try to find those persons in real life. That's like also very basic Bollywood kind of shit. अगर इसकी बहुत आसान लफ्ज़ों में आख्या जाए, लेकिन it's not that. It's larger than that. So it's not any कि तू सपना कोई Mr. Perfect लोड़ने ने चक्रा विचो. No, it's a different. So the kind of idea of a person that I create in my head, then I talk to that idea. और फिर उस आइडिया ने इर्द गिर्द इतना ज्यादा बिल्ड करना, ब्यूटीफाई करना, उसकी डेकोरेट करना, उसकी उसने अंदरों हर तरह नी फीलिंग की जड़ा वो इतना जिस सारे ना कि मटेरियलाइज करने हो तो अपने वर्ड्स ने नाल उस फीलिंग्स की, और वो खाली डिजायर या लव या लवी डवी और रोमांस और ये फीलिंग्स नहीं. इट्स लाइक लार्जर एंड बिगर एंड about every life. Yes. So that's how my sometimes it's not my muse also lies inside me, sometimes it's not outside. मतलब कि ये natural कोई element नहीं होने लगा, कोई इंसान नहीं होने लगा कि जिसको मैं बहुत inspire हुई भी हाँ तो मैं उसको inspire हुई करना लिखी छोड़ी ये किया वो किया. No, it's also that I create an idea in my head and then that becomes my muse and then I play around with that. And sometimes if that idea coincides with some real person in this world, फिर उस person बेचारे ने तो खैर ही नहीं होनी. Imagination क्या होगा ये? What are you talking about? In my world you did that. How come you don't here? Exactly. You don't know me. Like yes. कोमल समझ एक नावल नगार ते एक अफसाना नगार है. सो मैं लुक फॉरवर्ड करनी है उन सालां जिले इन चीज़ां जो गुजरी चुकी हो ना ते उसकी भी इजाजत देसो, क्योंकि ये जी दुनिया बिल्ड की है ना, इसने जेरे नावल नगार ते अफसाना नगार ना बड़ा ही वक्त गुजारने. अच्छा वाह. अच्छा ये मिगी ना हमेशा हमारे जितने सिंसियर दोस्त हैं ना हमारे नाल इस पूरी जर्नी विच जेड़े क्रिएटिव जिन्हां नाल ताल्लुक है अदबी दुनिया नाल, आर्ट दी दुनिया नाल. सो like from right very हमारे बहुत बचपन दे ज़माने च जेड़े टीचर्स होने जेड़े कोई तुसां की तक गल बाई छोड़ने जेड़े साने बुजुर्ग होने महल्ले ने. So I have heard it like for hundreds of times of people telling me कि
تو ناول لکھ تو افسانہ لکھ او ہے تاڑا او جانرا ہے ਤੇ I ਮਿਗੀ don't think ਹਾਲੇ ਇੱਕ genre ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਬੁਝਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੀ ਬਾਣਾ ਚਾਹਨੀ and Lekin especially it's some not ਬਹੁਤ because ਸਾਰੀਆਂ वो ਚ girl virus and me yeah बड़ी उसनकली कोई because you can say you're in a position from where you see you're on that position और तब तक ही सकने हो कि कौन क्या करना पिया. So I think I will give yeah it time to the novelist in me as well sometime. cool. But I think now it's also time to take it serious because so many people have told me so. ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਟ ਆਫ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌਟ ਆਫ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤੌਰ ਪਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ knowing मैं बहुत सारा अरसा हो गया ना कि ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਵਰਡਸ ਹਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਸकी ਬੈਸਟ ਸੂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮਾਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮੀ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸकी ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਸਾਂ ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ knowing through acceptance ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ you've known for a while who you are in that sense as well that ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ right time ਹੈ accept ਵੀ ਕਰੀ so at the moment we're going to enjoy your poetry so I'm going to bring you back to that ਤੇ ਮਾਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ writing process ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ writing process ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪੋਇਟ ਹੀ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹਾਂ ਕਿ ਥੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਹ ਤਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਥੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ are there any particular places ਜਿਲੇ ਸੋ ਬਈ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਮੌਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ ਹੋ ਸੀ are there any specific times of day I think ਸਵੇਰਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਾਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ so are there any particular times that ਰਾਤੀ ਵੀ ਸੋ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ ਜਗਾਣੀ ਹੈ yep so that's a couple of times there and ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਸਟਕ ਹੋਈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪੀਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਖੁਸ਼ ਨੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ It's a very interesting question, and I think it's also the answers will always vary, and one will get insight, and it will help one artist. asan ki help karsi ek due ki bhi isne bare jede bhi jawab hain ਜੀ so हमारे नाल ये तो नहीं है कि कोई particular places या times ने नाल fixation कुछ चीज़ा बीच में नहीं कि every morning doesn't give me a poem, every evening doesn't give me a poem, every walk in a jungle doesn't give me a poem, but I very frequently go to these places. जंगलों में तो मैं बहुत ज़्यादा फिरनी हूँ पहाड़ों पर जंगलों में मतलब कि आदम बेजार रही नहीं होनी जड़ी वो बहुत बड़ी आदम बेजार औरत हूँ मैं तब मैं कि इंसानों को दूर बस जिस लोग ना हूँ so but it doesn't mean that every lone corner gonna give me it's जैसे मैं पहले बताया कि म्यूज ना आइडिया क्या कि इनसाइड है इंटरनल है so I take that idea everywhere when I'm at a crowded place या I'm at a full house full है जब मैं उधर बैठी हाँ तो हमारे आइडिया नहीं उधर जगह कोई नहीं क्योंकि सारे फिक्स होए शोर है engagements हैं लेकिन when I am into these silent places let's say या रात ना टाइम है मैं कर ली अपने कमरे च जंगलों च गई हुई हाँ दरिया किनारे बैठी हाँ so then there I have this vast space to have interaction with that person उत्तर फिर ये हो जैसे कि interaction in हुई है तो थिया तो सही है मैं उसकी attend करना शुरू हो गई आप उस idea की it's not always person it can be anything so then ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲੋਜੀ ਸਿੰਬਲਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਈ ਜਾਸਨ ਮੈਟਾਫਰ ਆਈ ਜਾਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਸਨ या मैं पहाड़ नहीं पत्थर नहीं जुबान गुफ्तगू करना शुरू हो जाता so then that's like a combination and with the themes I don't think so that वही वाली गल है कि हाले तक मैं कोई deliberate उस तरह कोशिश की थी नहीं कि sometimes there happen events जिस तरह उन आसाना ताल्लुक है कि साउथ एशिया नाल इन रहने आसा पाकिस्तान नहीं पॉलिटिकल सिचुएशन और हर दूसरे दिन जिस तरह इंसिडेंट्स होने आर्मी पब्लिक स्कूल ने बच्चों का जो इंसिडेंट है उसके अस कदे ना भुली सकने हैं फिर इस तरह वॉर्स होनियां ਜਿਹੜੀ रेजिस्टेंस इस वेले चलनी पई बलूचिस्तान मारंग बलूच ये वो so I see people immediately writing poems about these things no so I kind of envy as well sometimes that these kind of events not all the time inspire me कि होना लग्या तो मैं मतलब कि पता है मिगी कि 4 दिन बाद न्यू ईयर है तो आज मैं न्यू ईयर पर नज़म लाजमी लिखनी चाहिए इस तरह नहीं हो सकता मानना उस जमाने च लिखियो जी भावें जून च बैठी गए तुसा न्यू ईयर पर नज़म लिखने पे हो but then it will find its relevancy later on so social events doesn't inspire me in that sense भावें वो कितने ही होलना खतर अजीब जो होना एक होनी वो एक genre ही अलग है जो poetry of resistance है for example जो विजिबल रेजिस्टेंस है चाहे वो
ज़ैनब ने केस थी रिलेटेड बहुत लोकां जी नज़मां लिखियां। सो माड़ी शायरी ने अंदर एक ये है कि वो पर्टिकुलैरिटी की एड्रेस नहीं करनियां एंड जी इट्स नॉट अ डेलिबरेट एफर्ट। समटाइम्स इफ दे डू हम्म, दैट्स आल्सो yeah, मतलब मैं कश्मीर च पिछले दिनां ओह् बिजली दे बिल ते जी प्रोटेस्ट ते सब चले yeah, मिगी कितने लोगें आखेआ कि इस उप्पर yeah, मैं भई yeah, ऑर्डर पे तो नहीं नज़में तैयार जी होती हैं। yeah. अच्छा परफेक्ट एग्जैक्टली इससे ऊपर मैं नेक्स्ट सवाल से पूछनी मैं आखिर दस बड़ा नगी सा पसंद जरी गल आही है ना ये परफेक्ट फिट है अगले सवाल ना सो अगले हुँ, सवाल ना जरा ना अस पे कुछ बंदे ना सॉर्ट ऑफ राय है शायरी दुनिया के सो लिखो हर रोज लिखो ते जना ओ मुसल स्ट्रांग होना तो सो बेहतर लिखी सकने हो जबकि हुँ, कुछ हुँ, बंदे ना ओ आखसन के जरी ना हर रोज लिखना ये भी कोई गल होई जना सो कोई चंगा थोड़ा लिखने हो हर रोज लिखने हो उसकी अपने हुँ, अंदर पक्कन दियो तैयार होन दियो फील करो फिर जिला से नदरू फट्टी दे पार निकल सी ना तो ओ शाकार हो सी हुँ, हुँ। जिसा क्या सोचने समझता क्या वर्क करना अच्छा मिगी लगदा कि इसी च डिपेंड करना कि तुसां ए जॉनरा नाल बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। लेट्स से बीइंग अ नॉवेलिस्ट आई थिंक यू हैव टू राइट एवरी डे अ लिटिल बिट and it goes like to stay into your own world with the characters and blah blah and it's not like hard and fast rule ki every day but I जी think मैं जितने भी नॉवेलिस्ट की जाननी है पर्सनली बड़े बड़े जड़े न अपने जॉनराज ने जायंट राइटर्स हैं बजुर्ग लोग हैं सो उन्हां नाल जदों भी इंटरव्यूज होए गुफ्तगू होई भावें ते ओह् हमेशा इयै बने रहे कि फिर एक पॉइंट अचना कि यू कैन नॉट हेल्प इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर एवरीडे लाइफ जी but as long as I think for the poetry and like these kind of individually माड़ा जड़ा है वो बहुत ज़्यादा एक उसे inspiration based muse based depends upon के something happens with me and I feel to say it like एक वो heaviness होना शुरू हो जानी out of nowhere और जी ताकि मिगी इस तरह महसूस होने लगना कि I need to say it out बाकायदा एक फांस एक जी जलन महसूस होने अंदर और बंदे की लगना कि I don't know पहले तो समझ ही नहीं आ रही कि what's going on is it like या मैं ठीक हाँ, मतलब क्या या होया मतलब नॉर्मल सी हाँ, कुछ इस तरह ना कुछ खादा भी नहीं मैं, कि काली पैन जी लगी मिगी ये है वो है, जी लेकिन सो दैट इज़ समथिंग आई थिंक डिफरेंट और वैसे ही जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮਸ ਹਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਆਣੇ ਦਾ ਆਰਟ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ जी ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਏ ਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਬਨ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਹਾਊ ਟੂ जी ਬਿਕਮ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਾਈਟਰ यस ਟਾਈਪ ਸੈਲਫ जी ਹੈਲਪ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ जी ਤੇ ਉਸੇ ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਆਖਣੇ ਕਿ एवरी डे लिखो जी जी या या आई थिंक समझी गए हो कि हमारा क्या जी मतलब है फिर एवरी डे नाल सो एज ए नॉवेलिस्ट यस इट गोज लाइक दैट बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो दैट थैंक यू आई थिंक कोमल जरा ना उन सम की दसो कि सकी केरे शायर इंप्रेस करने ते उन्ना विचों एक जरा को शायद सुना या शायद आप पसंद वैन उन्ना ने एक दो शेयर सुनासो प्लीज अच्छा अच्छा ये भी इसी च ये भी वो एक लंबा सवाल है लेकिन ज़रा असां प्हाड़ी च गुफ्तगू करने आं ते प्हाड़ी ज़ुबान च में हमीद कामरान साहब न सारे ही माड़े दे चुना गी जानने ते उन्हां दियां कुछ नज़मां उन्हां सुनाइयां सियां मैं उन्हां नाल सामने बैठी के सुनियां सियां तो बड़ा उन्हां ना एक उसी च कल्चरल एथोस विजिबल है ना उन्हां दियां नज़मां विच जी भी असल च असां दी प्हाड़ी ज़ुबान ना ओह् एक बनना ही फिर उस तरह ना अब एवरी जी लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स इट्स कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज लेकिन असानी जी ज़ुबान च क्योंकि ओरल है तो जी फिर असां थीम्स ऑटोमेटिकली उहे बनी जाने कि वी टॉक अबाउट आवर प्रैक्टिसेस उर्दू जी शायरी असांखे इस तरह दी नहीं लगे लगी अंग्रेजी शायरी भी इस तरह दी नहीं लगे लगी कि जी शेक्सपियर नियर पोएम्स आर नॉट always representative of the culture of England or London. जी It's different. So जी बहरहाल हमीद कामरान साहब ने एक नज़्म है कोको खासैया तो वो बड़ा मिगी उन्होंने मिगी नज़्म नहीं है याद लेकिन मैं जी सुनी जदों मिगी पसंद आई फिर से तो उन्होंने एक और है कि काश मैं भी भाला होना ते जी ओह् भी मिगी बड़े मैं उस नाल रिलेट भी करी सकनी आं कि आहो भाले ही होने ते स्हेई सा जी इस तरह ओह् हैन लेकिन ज़्यादातर मिगी शायरी विच उर्दू शायरी की मैं पढ़नी आं शौक नाल अंग्रेज़ी भी पढ़ी है लेकिन उर्दू ज़्यादा जी तो उस विच पुराने मतलब मीर ज़ाहिर है ज़्यादा मिगी जी पसंद न उन्हां दा इंतखाब मीर अक्सर पढ़नी रहनी आं। बाकी नमें जेह्ड़े लोक हैं उन्हां चों मजीद अमजद साहब कोलों मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर आं, मुनीर नियाज़ी कोलों बहुत ज़्यादा इंस्पायर आं, मुनीर नियाज़ी दी जेह्ड़ी एक फ़िज़ा है आई रियली लव इट। बट आई एम नॉट वेरी गुड एट रिमेंबरिंग वर्सेस आई थिंक आई विल ट्राई टू मीर ना एक शेर है कि किन नींदों अब तू सोती है ए चश्मे गिरिया नाग, मयगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। हाँ, तो जी फिर एक और शायद ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है कि
नहीं मिगी उसने दुआ मिसरा याद अचना पिया पहले नहीं याद अचना पिया एनीवेज इस तरह है कि आई कैन ये जेह्ड़ी 2 वर्सेस वाली पोएट्री है इसने नाल आई कैन it's pleasure to just to read it as well. So ये कि नून मीम राशिद साहब ने शायरी ऑफ कोर्स वो भी मिगी वो बड़ी एक डिफरेंट है बाकियों को उन्होंने नहीं जेह्ड़े नज़म ने तजुर्बे और एक मॉडर्न थॉट उस which डिस्कस on. So yeah, I have like this kind of different. थैंक यू। असां हुन अपने शो ने एंड ने को लगने लगे हुए, सो अपनी एक और प्यारी जी नज़म सुनाई छोड़ो प्लीज। अच्छा अपनियां तो मैं दो ही सोचियां सियां तुसा ने कोई नज़म ना सुना नहीं पहले तुसा ने एक और नज़म सुन शुरू विच सुनाई एक ते हुन तुसा नहीं वारी है पहले तुसा नज़म सुनाओ फिर मैं सुनासां फिर असां इसकी कंक्लूड करिए असां अज पहाड़ी नहीं करनियां लगियां ते मैं इक्के ही पहाड़ी नहीं अपने कोल कड्डी ते रखी सी दूई जेह्ड़ी है उर्दू नहीं है सेम मौजू पर है उर्दू सुनाओ मैं हुन मीर उर्दू जेड़ा है उर्दू ने मौला है उर्दू थी मैं इब्तिदा करी रही हां तां हुन उन्हां ने इजाजत थी बाद अस जेड़ा कोई मर्जी करा आई थिंक जिस समय स्टार्ट आखिया सी ना कि असां कश्मीरी वर्सटाइल असां एक ज़बान बोलने वाले ना सो असां ते जेड़ा ना सो चलना सो yes and that's the beauty yeah जी एक मैं सेट लिखी सी उसले चाइल्डहुड जेड़ा ना एक फेस्टिवल सी थे इंग्लैंड ते उसने वास्ते मैं तैयार कीते सन 4 डिफरेंट मौजूआं पर त्रै नज़मां त्रै ज़बानां च सो एह् जेह्ड़ी है ना जे नाइन ग्राबू जैसे ओह् भी बचपन दे बारे च सी ते उर्दू च है ते मारियां ज़बानां जेह्ड़ियां बाज़ वक्त किरदार आरन मैं एक से दो च लिखा ना ते त्री ज़बान शिकायत करनी नहीं है ठीक है मारे नाल कोई दुश्मनी है मारे नाल लिखनी सो इसदे च अंग्रेजी है और मैं अज ना सुनानी है उर्दू वाली सी सुनानी है सो उर्दू च मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे दिल बेकरार को आखिर क्या चाहिए आंखें बंद करूं गर तो नजर आता है ये मुझे रात गहरी स्याह चाहिए मुझे रात गहरी स्याह चाहिए फिर बड़ा हुआ आसमां तारों से चाहिए चांद तो लाजिम है पर 14वीं का चाहिए चांदनी में सामने वाली पहाड़ी पे खरगोश और लूमड़ भी दिखाई देना चाहिए सुबह के तारे के साथ दादी के उठाने की आवाज चाहिए तारों में पतंग ढूंढने के लिए बहनों का साथ चाहिए रमजान में सहरी को बाजरा और दही चाहिए बरसात में मकई का पराठा नानी के हाथ का चाहिए शब बरात के गोलू के मुकाबले के लिए कजन एक एक वो ही चाहिए ईद पे जूस मिठाई और झूला बड़े मामू से चाहिए गंदम दाल और तिल्ली अपने ही खेत की चाहिए हर रोटी पे मक्खन और ताज़ा दूध के साथ चाहिए पानी यख ठंडा अपने ही कुएं का चाहिए मैं किसान का खून हूँ मुझे अपनी ज़मीन चाहिए मैं कश्मीरी हूँ मुझे कश्मीर चाहिए वाह बहुत अच्छा थैंक यू सो कोमल नेक्स्ट पुछना सी कि अपने फंड्स वास्ते कि सोने कोई मैसेज है सोने प्लेटफॉर्म अगर सोने शेयर बुझना चाहन तो कुछ अच्छे न and anything else that you would like to say yeah okay so मैं तो अपने जेड़े भी मिगी सुनने लोग शौक नाल सुनने ते उन्हां दा मैं शुक्रिया अदा करसां और उन्होंने हौसला अफजाई ज़ाहिर मारिस्ता इट एड्स इनटू माय प्रोडक्टिविटी एंड अजय तक तो माड़ा एक मैं इतने ज़्यादा सोशल मीडिया एंगेजमेंट माड़ी है नहीं सी एंड आई डिड नॉट परस्यू इट बिफोर बट नाउ व्हेन आई डिसाइडेड टू डू इट एंड इट्स आई थिंक इट इज़ डूइंग good to me and as well as to my audience so it goes I would like it to be continue with future इस तरह होगा और एक को क्रिएटिव रिलेशनशिप नहीं मैं हमेशा कायल होनी है वन साइडेड interaction yes और बस मैसेज ये उसी कि अगर इफ दे वांट्स टू लिसन स्टे कनेक्टेड तो मैं जड़ा एक पहाड़ी पल्स विद कोमल राजा ने नाल एक फिर पेज बनाया सा क्योंकि ज़रा हमारी पर्सनल प्रोफाइल पर मैं चीज़ें शेयर करनी रहनी है लेकिन हमारी मर्जी ये है कि इस चीज़ इसका एक सेपरेट हो जाए क्योंकि पर्सनल हमारी प्रोफाइल विच हुआ तो सारी गल है कि एक तो असां लैंग्वेज ने वाल इतने वर्सटाइल हाँ फिर जी हमारी इंगेजमेंट है इट्स नॉट ओनली अबाउट पोएट्री इट्स नॉट ओनली अबाउट पहाड़ी आई एम अ रिसर्चर एज वेल एंड माई रिसर्च फोकस इज अबाउट पीपल ऑफ कश्मीर एज वेल सो हमारी एक जी एकेडमिक एक्सपर्टीज या वो एक जर्नी है जी वो बिल्कुल एक अलग साइड एंड आई आल्सो समटाइम्स गेटिंग सो मैं आई डोंट वांट टू डिक्टेट माय ऑडियंस के वो जड़े हमारी पर्सनल प्रोफाइल की किस तरह एक्सपेक्टेशंस की इन्नी वो अपनियां करने दा असां उन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं हिसाब नाल टूरा सो आई जस्ट वांट टू लेट इट बी जिस तरह हमारी पर्सनल प्रोफाइल है कि उसी हमारी मुख्तलिफ सेल्फ्स ना वो एक रिफ्लेक्शन है होता है चाहे हमारा एकेडमिक सेल्फ है पोएटिक सेल्फ है हमारा पर्सनल सेल्फ है
तो जी दैट्स वाई फिर मैं ते लोकां अगर सुनने ओ जेह्ड़े भी अज असां की सुनसन इस प्रोग्राम विच सुनने कि इ'यै आखसां कि माड़ा पेज जेह्ड़ा है पहाड़ी पल्स विद कोमल राजा उस उप्पर सुनी सकने माड़ियां चीज़ां उत्थै एक्सक्लूसिवली हर चीज़ पहाड़ी ज़ुबान इच है और सिर्फ जी शायरी उस इच होर चीज़ां भी हैन। उसी मैं फलसफा कदें डिस्कस करनी होनी आं कदें होर इस तरह दियां चीज़ां। So it's also a vast and versatile space. सोनी पेज ने पहाड़ी ची एक होर भी तारीफ करसां कि तुसां एक लफ्ज़ भी अक्सर देने हो कि एह् प्हाड़ी ने लफ्ज़ आ जिसकी डिस्कस करसां स्टफ सो Yeah. उस you know that's interesting as well. So जेह्ड़े बंदे प्हाड़ी शायरी च भी दिलचस्पी रखने न या प्हाड़ी थोड़ा सिक्खना भी चाह्ने या डिस्कस करना चाह्ने उ'नें गी भी इंटरेस्टिंग थीम्स एंड चीज़ां लभसन. So पहाड़ी pearls with कोमल राजा. Yes. Uh, as Komal Raja, thank you so much for being my first guest. I'm very grateful to you. Right. And अक्सर सोच होना कि जी अज ये बंदा बुलाई रहे हैं नहीं मैं सुन कि जरा उन्हीं गारंटी देनी है कि सुन कि आइंदा फिर बुलासा and I look forward to seeing you again. Yes, it was really nice talking to you and listening to you, and thank you very much for inviting me. So Thank yes, we will continue this. you. Inshallah. Allah Okay. Hafiz. Okay. Khuda Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much, Tanimi, for listening and for joining. अगले महीने ने जेह्ड़े मारे शायर होसन ओह् उर्दू ने लिखने आह्ले होसन ते उस तो अगले महीने ने अंग्रेजी आह्ले ते मैं इ'यै फॉर्मेट जेह्ड़ा ना हर इत्थूं रेगुलरली रखसां क्योंकि जिस मैं है कि असां सॉर्ट ऑफ जेह्ड़ी कश्मीरी जेह्ड़े बंदे आं थोड़े जे more कॉम्प्लेक्स आं असां सिर्फ इक ज़बान बोलने ना इक ज़बान असां बुझने ना so असां दी जेह्ड़ी शायरी है I'll keep bringing you different aspects of ourselves and our languages. I look forward to meeting you again. I hope you have a wonderful month. Thank you. Allah Hafiz.